Hello dear friends. Today in this video we will discuss about the preparation and purification of colloids. In the previous video we have seen some characteristics of colloid, that the particle size of colloids are in between 1 nanometer to 1000 nanometer. So let us start first the preparation of colloids. Preparation of colloids, if we discuss, there are number of methods. Out of them, number first is chemical method. Chemical method से colloids को prepare कर सकते हैं हम. Colloids can be prepared by chemical reactions leading to the formation of molecule by double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis, etc. By these methods, the particles leading to the formation of sols having the particle size 1 nanometer to 1000 nanometer. For an example, arsenious oxide when combines with hydrogen sulfide, by the double decomposition that will be forming arsenious sulfide sol. This method is leading double decomposition methods by which colloidal sol of arsenious sulfide is getting formed. If we see ferric chloride reacting with water forming ferric hydroxide sol. Ferric hydroxide sol is formed by the hydrolysis of ferric chloride. So, a number of chemical methods are there by which sol can be formed. Another method of sol formation is Brady's arc method. Brady's arc method, in this process, this involves dispersion as well as condensation. Dispersion as well as condensation. The particle size is reduced to 1 nanometer to 1000 nanometer. If the size of the particle is bigger one, that should be decreased by using electricity here. For an example, the colloidal sol of metals such as gold, silver, platinum, etc. can be prepared by using this method. Now, if we see what we have to do in this method, इस method में हमको करना क्या रहता है? In this method, an electric arc is struck between the electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. जिस भी मेटल का हमको सोल बनाना हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आई वांट टू प्रिपेयर अ सिल्वर सोल इन वाटर. सिल्वर सोल, सोल किसको बोलेंगे? इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सॉलिड एंड डिस्पर्शन मीडियम इज लिक्विड. आई वांट टू गेट सिल्वर सोल इन वाटर. इफ we dissolve silver in water, then there will be no sol formed. The sol of silver in water can be prepared by using Brady's arc method. इस Brady's arc method में, for an example, we want to get the silver sol. See Brady's arc method. For an example, I want to form the silver sol. So the rod of silver is taken here, another electrode of silver is taken here, and they are connected with anode and cathode terminal of the battery. The electrodes are immersed in dispersion medium, like here dispersion medium is water. This is our dispersion medium. And outside the dispersion medium, an ice bath is packed, ice is packed for the condensation process. When electric arc is struck, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाता है, the metallic rod or electrode gets heat, and due to this an arc is developed between these two.
Due to this arc, metal vaporizes and on condensation converts into liquid state once again. So by the repeated process, the silver gets dissolved in water and will be forming heterogeneous mixture. So this is called Brady's arc method or electrical disintegration method. Why we are saying electrical disintegration? Because electricity is used to disintegrate the particle to make the particle size in between 1 nanometer to 1000 nanometer. Third method is peptidization. Peptidization क्या है? For an example, we have prepared a sol and that has converted into precipitate. तो उस प्रेसिपिटेट को सोल में कन्वर्ट करने की मेथड है पेप्टाइजेशन. सो पेप्टाइजेशन is defined as the process of converting a precipitate into colloidal sol by shaking it with dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. मतलब whatever precipitate is formed, that precipitate is to be shaken with dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte. What will happen? The precipitate will adsorb some of the common ion from the electrolyte on its surface, and due to presence of this charge, the particle of precipitate undergo disintegration, and the size of particle reduced to 1 nanometer to 1000 nanometer. जैसे for an example, if we say what happens when ferric chloride is mixed with ferric hydroxide. For an example, a ferric hydroxide sol is there. When this ferric hydroxide sol is mixed with ferric chloride, nothing, just the peptidization process occurs. फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो अपने सरफेस में आयरन आयन को एड्सॉर्ब करता है, and due to adsorption of ions on its surface, the size of the particle reduced. For an example, this is our ferric hydroxide. Due to the adsorption of positive charge on its surface, the particle, due to repulsion between the charge, will convert into smaller pieces, smaller particles, and in this way the size of the colloidal particle is reduced. So these are the methods by which colloidal sols can be prepared, colloids can be prepared. But when disintegration method or chemical method or what we can say peptidization is done, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी हो जाएगी, या हो सकता है 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल बड़ा हो. कॉलॉइड की हम बात करें तो साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. सो if we want to separate the particles of colloid having 1 nanometer to 1000 nanometer with the particle size less than 1 nanometer, it will be called purification of the colloid. It will be called purification of the colloid. Purification of colloidal solution, the process used for reducing the amount of impurities to requisite minimum is known as purification. मतलब कॉलॉइड में से अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर करना, अनवांटेड पार्टिकल्स को हटाना ही प्यूरिफिकेशन होता है. द प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन कैन बी कैरिड आउट बाय फॉलोइंग मेथड्स. नंबर फर्स्ट, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. We will see the methods of purification of colloidal solution, dialysis, electrodialysis and ultrafiltration one by one. See, number first process is dialysis. Dialysis का नाम हम लोगों ने सुना है. ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है.
ब्लड को डायलाइज किया जाता है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन डायलिसिस इज डन। तो डायलिसिस क्या है? Just see, it is the process of removing a dissolved substance from a colloidal soil by means of diffusion with the help of suitable membrane. किसी membrane की help लेकर के अगर हम colloids और the particles having less than 1 nanometer diameter called crystalloids उससे अगर अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। अब इस डायलिसिस प्रोसेस में किया क्या जाता है? कोलाइडल सोल जिसका हमको प्रिपरेशन करना है दैट शुड बी फिल्ड इन दिस वन। आफ्टर दैट इट इज कवर्ड विथ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आउटसाइड दिस वन। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन वी कैन से। इट इज हैविंग द पार्टिकल्स ऑफ colloids एंड crystalloids. When water is moved, वाटर अगर इसमें फ्लो किया जाता है, सपोज वाटर इज कमिंग फ्रॉम हियर, ये जब यहां से जाएगा तो वाटर विल एंटर इनटू दिस वन ड्यू टू द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ मेम्ब्रेन। द पार्टिकल विच इज हैविंग स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू द पोर्स ऑफ मेम्ब्रेन, जिन पार्टिकल की साइज मेम्ब्रेन के पोर्स की साइज से कम होगी, दे विल पास फ्रॉम हियर। The particles which are having a smaller size will be called crystalloids. अब अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन आपने यूज किया है that is having a pores of 1 nanometer. So the particles having size less than 1 nanometer can pass through the membrane. वो मेम्ब्रेन में से पास होकर के बाहर चला जाएगा। लेकिन कॉलॉइड का जो पार्टिकल है जिसकी साइज 1 नैनोमीटर है या 1000 नैनोमीटर से छोटा है, वो इसी मेम्ब्रेन के अंदर रह जाएगा। सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई colloids from crystalloids. Although the process of dialysis is very slow, the process of dialysis can be increased by using electrodialysis, by providing electrodes. Dialysis can be made faster by applying an electric field. वही डायलिसिस का आप सेटअप ले लें और एक तरफ एनोड दूसरी तरफ एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगा दें। Because of presence of charge on the colloidal particle, the dialysis becomes faster, and this method is called electrodialysis. So what should be an electrodialysis? The process of dialysis for the purification of colloids. When done in presence of electric field, it will be called electrodialysis. इन दोनों के अलावा एक और मेथड है जिससे हम कॉलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो नॉर्मल लैब में फिल्टर पेपर होता है उसकी जो पोर साइज होती है दैट विल बी हैविंग लेस देन 1 नैनोमीटर। तो वी कैन नॉट सेपरेट द कॉलॉइड्स फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि उसकी जो पोर की साइज है उसमें से आपका जो पार्टिकल होगा वो भी इजीली पास हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड, मतलब अगर आप चॉक पाउडर में से वाटर में चॉक पाउडर डिसॉल्व कर दिया और फिल्टर पेपर से अगर आप फिल्टर करें तो यू कैन फिल्टर इट इजीली, क्योंकि चॉक पार्टिकल्स का जो साइज है दैट विल बी बिगर एज कंपेयर टू द पोर साइज ऑफ फिल्टर पेपर। लेकिन स्टार्च का सोल बनाया हो और उसको अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर से आप फिल्टर करें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज द पार्टिकल ऑफ स्टार्च can pass through the ordinary filter paper. So ultrafiltration is beyond that one. Ultrafiltration क्या है? The filtration with the help of ultrafilters. Colloidal particle can pass through ordinary filter paper because the pores are too large. However, the pores of filter paper can be reduced in size by impregnating with colloidal solution to stop the flow of colloidal particles. मतलब जो नॉर्मल लैब में जो नॉर्मल फिल्टर पेपर यूज होता है उसकी पोर्स की साइज को हम कम कर सकते हैं बाय
dipping the filter paper in colloidal solution. Colloidal solution होता क्या है? See, the usual collodion is 4% solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether. 4% solution of nitrocellulose. Nitrocellulose present 4 gram in a mixture of 100 gram of alcohol and ether will be 4% nitro solution. 4% solution of nitrocellulose. If we dip the filter paper in a collodion solution, an ultrafilter is produced. An ultrafilter paper may be prepared by soaking the filter paper in colloidal solution and hardening by formaldehyde and then finally drying. मतलब पहले filter paper को लिया, 4% नाइट्रोसेलुलोज में डिप किया और उसके बाद में फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं तो पेपर विल बिकम हार्ड, एंड आफ्टर ड्राइंग द नॉर्मल फिल्टर पेपर विल बी कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर. बाय अल्ट्रा फिल्टर द colloidal particles are separated from rest of the material. In this way we can purify the colloids from crystalloids. The particles having size 1 nanometer to 1000 nanometer from the particle is smaller than 1 nanometer or bigger than 1000 nanometer. So these are the methods of purification of colloids. In the next video, we will discuss about the properties of colloidal solution like colligative property, Tyndall effect, color of the sol, Brownian movement, charge on the colloidal particle, electrophoresis and coagulation. Friends, if you like the video, please subscribe eTube Academy. Thank you all.